Good morning, viewers of the Analytic Ayurveda. I Anju Changir, PhD scholar of Department of Rash Shasan Bhashajay Kalpana, Banaras Hindu University, Varanasi. I welcome you all in today's session with a new topic with our Professor Anand Kumar Chaudhary sir. Many scholars have been discussed in various topics like millets, personality development, and clinical trials. And I am back with a different topic, which is interdisciplinary research, its challenges in today's world. So, and I am feel very blessed to host this session with sir. Sir, shall we start? Yes, welcome. Namaste, all learned viewers of the Analytica Ayurveda. और आज की श्रृंखला हम लोग एक नए शोध छात्र के साथ शुरू कर रहे हैं। ये मिस अंजू जांगीन हैं, जिनकी बैकग्राउंड एमए जोग्राफी फ्रॉम यूनिवर्सिटी राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से हैं ये, और ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च में रसशास्त्र विभाग में हमारे साथ शोध करने के लिए आई हुई हैं। और इनका जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पूरी दुनिया उस पर जा रही है। अभी आप ये देख लीजिए कि जो WHO की ग्लोबल समिट पहली हुई 17-18 अगस्त को, देयर आल्सो हर टॉपिक वाज ऑन द वेरी मच ऑन एजेंडा। एंड नाउ यू मे आस्क कि व्हाट इज़ हर टाइटल फॉर द research work. So her title is very relevant, and it is about the how the health and the wellness centers of the Ayush, particularly Ayurveda, are working in the northern India. So she is going to study this particular theme, and she is going to visit Banaras, Haridwar, Agra, Jaipur, Delhi in the whole northern India, and she will study the status report of the particularly the establishment and the functioning of the and the public perception, not only the Indian but the global public citizens, what they are feeling about this working of the wellness centers, Ayush wellness centers, as well as what kind of improvement they want to make it more effective for their promotion and the prevention of the health. And therefore there is such kind of the researches, that is the transdisciplinary research. She is postgraduate of geography and the tourism geography, and working in the field of wellness center Ayurveda with us. We too welcome you, Anju, in our research trust area. And now, yes, your Thank you, sir. session. Yeah. So the first question is, sir, how does the interdisciplinary research is different from the traditional disciplinary research focused, and why this difference is important? See, your question is that how it is different from the traditional research, right? So when you think like this, see, research was earlier limited to its own domain, right? But in this way, if you think how you are here, many others are here, so when two different disciplines, which looks that they are quite apart, there is no connection between those two disciplines, and if they are working together, coming like if you say botany and the geography, if you say like geology and the commerce management, or you can say the Sanskrit and the science, right? So such kind of the, and there is a scope of such kind of the titles and the researches what you are doing. And then if you see here, it is really will be a great achievement if these two different branches, which are far apart in their thrust area, but they search a connecting line and work upon all that, it will be very much fair, and then it will be good to work on this and the new thrust areas. Traditional research was just if a person is in the Rasas, he is working on the Sodhan Maran. If a person of Dravigun, he is working on the plants, Kachikitsa, the disease. That is the traditional research of the own discipline. But if a new dimension of a new subject of the new discipline, knowledge of the discipline is incorporated there. For example, here, this is the one good example of the interdisciplinary research. I am from the Rasas, that is the
drug manufacturing, Ayurveda pharmaceutics. You are from the geography and the tourism geography, and we both are together working for the establishment and the promotion of the Ayush health wellness centers. And recently you have joined one conference in the Lucknow, and we have searched out your co-guide, co-supervisor from the Department of Geography. She is also working in the same way to the medical tourism, you can say it, medical tourism. And then the scope and the points of the geography by which they promote all that, that is really a wonderful theme to see. And this is the new education policy which is providing you this opportunity. Next. Thank you, sir. Now I would proceed to next question, that what challenges and barriers might a researcher encounter when engaging in interdisciplinary research, and how can we overcome from these challenges? Means, Sanju, you are asking the things which we have suffered since last 1 year. Is it? So not suffered, I can clearly say this. But Because see, in this coursework and many other academic procedures of the going on through the different disciplines of the research, the parent department, for example, here the Rasas department, right, the branch of Ayurveda, and you have gone through the selective papers of the Rasas and in the coursework and the supervisor paper and all that. Means these are the something which are problematic for a research scholar. If a Sanskrit scholar is going in the science and there is a question of science and as per the coursework, and if a science person is going to the Sanskrit Dharma Vigyan Sankaya, then the questions of the Ved and the Agam, this is little bit difficult, but जहाँ चाह वहाँ रहा, आपने कोप अप किया और फिर हम लोगों ने भी कोऑपरेट किया, हमने आपके लिए वो मॉडल तैयार किया. इतनी लिबर्टी है सुपरवाइजर को कि सुपरवाइजर पेपर. So I kept all that things which are very much relevant to your research work and your PG subject. And this is the beauty and this is the responsibility of the department to make your path easy, not to complicate it. कि नहीं हम छोड़ के PhD छोड़ के भाग जाए, हम तो रसराज का शोधन मारण का श्लोक नहीं याद कर पाएंगे. अगर मैं आपसे शोधन मारण का श्लोक याद करवाता कि नहीं आप ये याद करिए, आप रसराज विभाग के शोध छात्रा हैं और आपका कोर्स वर्क में हम बदलाव नहीं करेंगे, जो हमारे पीजी स्कॉलर्स के लिए है, जो मेरे साथ MD आयुर्वेद रसशास्त्र कर रहे हैं, जो पेपर वो दे रहे हैं, आप ही पेपर वही आप भी देंगी, तो आप निश्चित रूप से भाग खड़ी होती. एग्जैक्टली सर. तो लेकिन ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी की लिबर्टी है कि ये डिफ़िकल्टी तो है. आई डू एग्री विथ यू कि जब आप अपने डिसिप्लिन चेंज करते हैं तो नई डिसिप्लिन में आपको थोड़ा सा उसको तो जानना पड़ता है, और जब आप थोड़ा सा उसको जानेंगे तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आएगी, क्योंकि आपके पोस्ट ग्रेजुएट तक उस सब्जेक्ट का एक्सपोजर है नहीं. Yes, sir. और बिल्कुल एक नया सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिल गया. अब आपको आयुर्वेद के कुछ फंडामेंटल्स पढ़ने को मिल गए, तो थोड़ी डिफ़िकल्टी है, लेकिन उतनी नहीं कि इसको पार ना पाया जा सके. अरे आप यहाँ देखिए ना, आप तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं, UPSC में सब्जेक्ट लोग वो ऑप्ट कर लेते हैं जो लोग कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में पढ़े ही नहीं हैं सिविल सर्विसेज में. Yes, फिर वो नए सिरे से पढ़ते हैं और उसमें क्वालिफाई भी करते हैं. Yes, sir. तो ये ह्यूमन ब्रेन जो है ना, वो सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहता है, बशर्ते कि आप उसको वहाँ अप्लाई करिए. तो बाकी एक और डिफरेंस आता है, जो आता है वर्किंग कल्चर का. जब आप एक अलग फैकल्टी के स्टूडेंट हैं और एक अलग फैकल्टी में जाते हैं, तो दोनों ही फैकल्टी में मैच करना स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, और क्या कभी कभी तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है. अब मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा कि इस फैकल्टी में कितनी लिबर्टी है, डिसिप्लिन है, या आने जाने में कोई रोक नहीं है, या किस फैकल्टी में टीचर्स कह देते हैं कि अगर जब तक मेरे साथ PhD कर रहे हो तुमको शादी नहीं करनी है. हाँ, ऐसे हैं रिसर्चर्स इस तरीके से हैं जो कि जब 5 साल 4 साल रिसर्च और डे नाइट वो लैब में रहते हैं, और स्पेसिफिकली साइंस स्ट्रीम में या और भी टेक्नोलॉजी की स्ट्रीम में, जो स्टेम कहा जाता है कि साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ, उन फील्ड में जाइए या लाइफ साइंसेज में जाइए, तो ऐसे डेडिकेटेड रिसर्चर्स टीचर्स हैं
जो कहते हैं कि नहीं, आपको अपनी पर्सनल लाइफ को कीप असाइड थोड़ा रखना पड़ेगा अलग, और आपको 3 साल बस इस लैब ही आपकी फैमिली है और इसमें ही आप कंट्रीब्यूट करेंगे नेशन को। तो लोगों ने नेशन को कंट्रीब्यूट किया भी है। तो अब इंटर डिसिप्लिन रिसर्च में रिसर्च करने के नाम पर एक बहुत लिबरल बंदा, जहाँ पर किसी सब्जेक्ट में जहाँ पर कि छात्र के साथ गुरुजी भी एकदम लिबरल होते हैं, और वो आ जाए कहीं इस तरीके से जहाँ पर कि उसको एकदम लेबोरेटरी और डिसिप्लिन और डिपार्टमेंट में बैठना और रोज़ साइन करना, ये सब चीज़ें हो, तो डिफ़िकल्टी होती। तो यही डिफ़िकल्टी है, और कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। आप पढ़ना चाहें तो आप रिसर्च के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं, और बीएचयू में तो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की इतनी संभावनाएं हैं। और ये बीएचयू में नया नहीं है अंजू, मैडम अंजू, ये जान लीजिए कि ये एनईपी के तहत ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च बीएचयू नहीं शुरू की है। जब से बीएचयू ने कॉन्सेप्शन से, जब मैं यहाँ पर पीजी किया, और अरे उनको भी छोड़िए ना, जो आयुर्वेद में बहुत अच्छे हमारे डिपार्टमेंट के अलमुनाई जिन्होंने कि डाबर को लीड किया, जो कि अभी इस समय इमामी में हैं और एक बहुत बड़ा सिग्नेचर हैं ड्रग डेवलपमेंट के फील्ड में, डॉक्टर सीके कटियार। उनकी पीजी की डिग्री रसशास्त्र में है और पीएचडी की डिग्री फार्माकोलॉजी में है, और आज से 40 साल पहले। तो बीएचयू का जो ये विज़न था ना कि वो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, तो आज दुनिया और एनईपी की बातें कर रही है, बीएचयू तो इसको अर्धशतक लग चुका है। 50 साल पहले से बीएचयू इसको कर रही है, और एक हर डिसिप्लिन में हर जगह से लोग, आपको पता है कि डॉक्टर जीएन सिंह जो अभी सीडीएसओ में थे या डीजीसीआई थे, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया थे, एमफॉर्म थे, मैं नाम लेके बता रहा हूँ, और उनकी पीएचडी का चिकित्सा में। तो ये बीएचयू की खासियत रही है, जिसको कि अब एनएपी ने लिया है। मैंने 2 नाम दिए आपको कि डॉक्टर सीके कटियार जो कि एमडी रसशास्त्र थे हैं, और पीएचडी उनकी फार्माकोलॉजी में है, और आज वो कहाँ पर पहुँचे। और डॉक्टर जीएन सिंह जो कि डीजीसीआई रहे, बहुत बड़ी गवर्नमेंट की पोस्ट है, उससे ऊपर कोई पोस्ट नहीं है ड्रग में, और वहाँ रहे, और वो अपनी मेन डिसिप्लिन एमफॉर्म से थे, और उनकी पीएचडी क्या चिकित्सा में प्रोफेसर आर सिंह साहब के अंडर में थी, है ना। तो बीएचयू इज़ द प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन डू अमेजिंग रिसर्चेस विद द इंटरडिसिप्लिनरी टारगेट्स, एज यू आर फीलिंग हियर सिंस लास्ट 1 ईयर, कि आप जहाँ भी जाती हो, जिस डिपार्टमेंट में जाती हो, आपको वहाँ पर एक तरह से वेलकम स्टेप मिलता है, और लोग प्रमोट करते हैं कि हाँ आप काम करिए। यस सर। हाँ, तो सर हम कहना चाहेंगे कुछ लिबर्टी के साथ में, कॉपरेशन और डिसिप्लिन के साथ में हम इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को भी साथ में कर सकते हैं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर, हाउ डू यू एड्रेस डाउट टुवर्ड्स इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च फ्रॉम ट्रेडिशनल एकेडमिक स्ट्रक्चर्स? ओह, रियली टफ क्वेश्चन। Traditional academic structure. Yes, sir. Define what do you mean by traditional academic structure? Like if I am from geography background, Right. so I have to be do my PhD from the geography department only. I can't be in the Rashastra or Ayurveda. This is a traditional academic structure. Okay. So Yes, traditional academic structure we have addressed back a few minutes, that a person of the same discipline is pursuing research title in the same discipline. But this is a new venture and new thought processes where 2 different stream of the knowledge are coming together and working together, and certainly there will be a progressive sign. So it is entirely different. It is not just a difference for the difference. No, it is entirely different. A person of geography, your batchmate, is working on the mercurial industrial pollutant, right? yes, sir. So a student of Rasashastra is knowing about the mercury toxicity, the mercurial medicine toxicity. And if he or she is working a PhD on the Ras Sindoor or the Ras Parpati or whatsoever, mercurial medicinal product, and Ashish is working on the mercurial industrial pollutant and impact of these pollutants on human health and its probable remedies in Ayurveda. So the methodology to address the issue by a postgraduate of the geography
who has gone through the industrial geography and the address of the issue by a MD Ayurveda Rasas, who have gone through the only the pharmaceutical processes and the clinical effect and the safety studies. It is entirely different, but the outcome is the same. Both are working for the humanity. If a geography product, namely Ashish Rai, if he is working and successfully he will work on the area of the Sonbhadra, what the title has been allocated to him by the our DRC, or the I can claim by me, right? The DRC approval is necessary, and DRC has approved it. So just I asked him to survey the whole area of the Sonbhadra, where the NTPC and the many more industries are located, and they are just polluting the soil, the water, the air, with the whole environment there. And Ashish is going to address that issue, and he has started already in a very good pace. So here, Rasas people is working in a different approach, and a industrial geography person will work on the different approach, but the result is the same, subject is the same. That is the benefit of the human and the nature, right? Yes, sir. Okay. Thank you, sir. Sir, how can we maintain the motivation and enthusiasm for interdisciplinary research or research or projects over the time? एक ही सवाल आप घुमा घुमा के पूछ रही हैं. सवाल आपका थीम तो एक ही है, लेकिन आप वर्ड्स उसको अलग अलग दे रही हैं. तो दैट्स गुड. इट्स क्वालिटी ऑफ द होस्ट कि repeatedly raise the issue to come on the point. है ना? See, the motivation. And it's $1 million question, the motivation. Sorry to interrupt, sir, because this is a thing which I feel sometimes. Like, how do I do this? How can I do this? Like, how can I add Ayurveda in my research? And this kind of motivation. So I feel sometimes ki under the motivation. So that's why I have asked this question. No. I appreciate your question. There is no need of sorry. I got the word, and I got your whole the theme why you are raising this question, and you have discussed it already. You and all research scholars who are with me of the allied. One is from the food and nutrition, one is from the food technology, you are 3 persons are from geography. So everyone is asking that motivation. I told you the motivation. The motivation, if someone is working on the food and nutrition and the Ayurveda Ahar and she's aiming pizza with the millet pizza and with the some medicinal plants, adding their Satauri, Ashwagandha, and see the nomenclature is there, Ahan Urja, and to the youths of the university campus, like all that. Ms. Aparna is working on this issue, you are working on the tourism, and the Ashish is working on the Mercury, and the Preeti is working on the women and child health care sustainable development goal. तो यू ऑल जस्ट थिंक इन योर माइंड कि हमारी इस पीएचडी का क्या होगा. जब हम हायर एजुकेशन में इंटरव्यू देंगे तो क्या इसको जो हमारे मेन डिसिप्लिन की पीएचडी है उसके बराबर मान्यता दी जाएगी. वेदर माई पीएचडी विल बी कंसिडर्ड एट द लेवल ऑफ द पीएचडी बाय द सिलेक्शन कमिटी देयर. We are enrolled in Ayurveda and specifically in the Rasas or anywhere. The Rasas has given you option there are 5 allied geography, you are here. Now the BHU has limited. Earlier BHU is having 30-40 allied subjects for one department, but now it is limited to the 5. So only 5 disciplines you can pick in one academic year. So we have picked geography, home science, pharmacology, and pharmaceutics. So out of these, and the management, and out of these 5 only we are taking research scholars apart from the MDI with Rasas and the Basis Kalpana. Fine. So the motivation is your result of your work. I always say, I am going through the name ki Aparna,
Cadbury will be your destination, right? Because see, everything, if it is these companies who are launching, see the variations of the champra, see the variations of the dantkanti, see the variation of the Colgate, see the variations of the anything in the market which is very much popular. So Ayurveda is the word and the herbal is the word which is attracting everyone. So if in the market she is coming with her products which are having the Ayurvedic concepts there, and they are servicing the youth particularly, where she is what the problem she is addressing, and her project is addressing, and her supervisor is really very scholar, gold medalist from the Center of Food Technology of the Institute of Agricultural Sciences, Dr. Ankita Hooda. So if she's assistant professor, if these are the interdisciplinary researches are going on, see, Ashish supervisor is also from the Institute of Sustainable Development, right? So these opportunities, these team where one is from the parent, one is from the allied, and the one is from the all the disciplines, and the work will speak for you. The motivation is there in your result. So she will be called by the a lot of corporate for the test of the Ayurvedic Ahar to launch a product. You may be a very good policy makers, and I always say you have to work in that way. Ki Niti Aayog should quote your publications. Yeah, your target what I have given you. Ki Niti Aayog should quote your publications that these Ayurveda and the wellness Ayush wellness centers are the other words Ayurveda wellness centers will attract more Europeans, more Australians, more Americans in this northern belt. Keep aside the southern belt. In this northern belt, where what you are addressing, right from Delhi to Jaipur to Haridwar, Rishikesh, and Banaras, Agra, this circuit, right, Allahabad. So here there will be boost in the economy, boost in the every point, everything, and these are the things which where the Niti Aayog is working, and your observations, your suggestions, your all survey reports will be very much helpful. The motivation is here that you may be hired by a company which is playing a major player in the field of tourism, and they are utilizing your whole work and your expertise. Yes, here this sector and this sector here Australian will be preferring this much, and so that center will be developed according to the choice of the Australians. That centers will be developed by the according to the choice of the French people. So these things are the just bare area where there is a need of not one research scholar like Anju from Jaipur. Here is a need of a series of research scholars and pinning to the point, not completing the research, not getting the ornamental degree for the sake of the degree. See, you all are JRF holders, and government is giving you and a lot of fund, and of course, if you talk to me, I am also giving you my seat where an Ayurvedists are in the waiting. Yes, sir. Where the Ayurvedists are in waiting, yes, I should do work with the answer, but I have given my seat of the 8 to you people because I know the thrust area. I have make the balance, half MDR with Rasas and half for the allied. But simple point is here that this interdisciplinary research will give a boost to the every corner sectors of the India. On which line you will think you will be getting a point that you are valuable there, your need is there. Maternal child health care, the reports as per the SDG, and this mercurial toxicity and the pollutants, everything is depending, every motivation is depending on the result of your work. And in your interview to be a lecturer in your degree college or the university,
in the departments of geography or in the department of community medicine or the home science, whatsoever the things are there. So it's totally depending on the person who are there in your selection committee, whether that professor is having a good idea about the policies of the NEP, whether he is getting and he has perceived the thrust area of the NEP and the importance of the interdisciplinary researches and its contribution to the development of the nation, then certainly he will give weightage to you. And of course, they will be. Yes, once again and again I repeat, it is totally depending on the mindset and the thought process of the person who is interviewing you in your selection committee of assistant professor. If he is admirer of the NEP, if he has a progressive mindset, he or she will appreciate your work. And if he or she is something believing, as you are using the word traditional, but this traditional word is not good, you just rectify it. It will be better to say the conventional medicine and the interdisciplinary, conventional research and the interdisciplinary research. And then if he or she is not having such kind of the idea, then certainly दे विल से कि नहीं आपकी इस थीसिस के कोई महत्व नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है. बट एवरीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन द चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी, एंड इफ ही इज हैविंग एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग द NEP and your NEP, keep aside the value and the volume of your work and its appreciation in your publications. As I said, कि your publication should be of that highest level, where the government of India or the Niti Aayog or any relevant organization is quoting you. Just I have given you the example that one of my paper in the WHO Global Summit of the 17th and the 18th August was on the display and that paper was published into the back 2010 probably, and screenshot was sent to me by my well-wishers there. So this is the value of your publication. This is the value of your work, which will motivate you like anything. And I always say, you all four who are with me and all who are listening and doing the interdisciplinary research in many parts of the country, right? Certainly, future is yours. Future is yours, provided you contribute by your theme, subject, thrust area, and you are successfully connecting the two different streams of the knowledge. Yes, please. Thank you, sir. Now I have a question for the sir only. That, sir, how do you balance or handle the communication and collaboration challenge when working with the individual from different disciplines? Like, sir, sometimes we have to discuss with me with the background of geography. Sometimes he have to discuss with Aparna. She's from the background of home science and working on nutraceuticals. Then how did sir balance this communication? See, it's not a question, it's a passion. And passion of mine. Your question is right at your place, ki how I am making the balance, and answer is with most humbleness. That is only the love and dedication to the thrust areas where I wish to work. I was willing to work on the nutraceuticals since last 1 decade. Whenever an MD Ayurveda scholar is coming for PhD or a BMS is coming for the MD, I propose, would you like to work on the nutraceuticals? And after 1 week or the 10 days, answer is no. Sir, we will do something related to the Kalpana, we will do something related to the Vyadhi, like that. So I kept, because it's my perception, it's my thinking that I never just said my scholars who are with me, the co-learners in the PG or the PhD, that you have to do this. No, I never did in the whole my career. And this is the reason that my field is very vast.
Sometimes say it is wrong. One lab should be doing on the one title only without giving liberty to the willingness of the scholars, either PG or the PhD. You have to work on this. You have to work on the cancer, or you have to work on the diabetes, or you have to work on the images of the radiotherapy, like that. But I don't follow this. I followed just the point where you just uh, whatever you want to do, you do. My understanding is this: कि if a theme of willingness of scholar is with him or her, he or she will perform better. So they deny nutraceutical and I accept. But now when Aparna is working, some of them who are there, oh sir, तो गलती हो गया, nutraceutical लेना चाहिए था, क्योंकि nutraceutical is booming. मार्केट ऑफ द न्यूट्रास्यूटिकल इज बूमिंग. आपकी थीसिस ये नहीं होनी चाहिए कि आपने रखा और डिग्री लिए चले गए. आपकी थीसिस वो होनी चाहिए कि मार्केट में उसकी वैल्यू हो, उस पर इकोनॉमी में उसका कुछ कंट्रीब्यूशन हो. तो हम तो इसी सोच से थीसिस कराते हैं कि आपकी थीसिस इकोनॉमी में कैसे कंट्रीब्यूट करने जा रही है, राइट. तो इन द सेम वे अब ये जो आशीष काम कर रहे हैं मर्करी पॉलिटेंट पर, या आप जो काम कर रहे हो वेलनेस सेंटर्स के प्रोग्रेसिव पर, तो आपकी जो रिपोर्ट आएगी, जो आपकी थीम आएगी, तो उससे कंट्री को कंट्रीब्यूट करेंगे ना हम लोग. अब WHO समिट में क्या था कि हम 1400 वेलनेस सेंटर्स खोलने जा रहे हैं. लेकिन अब एक सर्वे करके, अभी आप उनको मिल के आई जो यूपी के टूरिज्म के डायरेक्टर हैं श्री प्रखर मिश्रा जी, या अभी आप इनके यहाँ गई थी जो जिला पर्यटन अधिकारी हैं बनारस के, हाँ RK रावत जी. तो आप बताइए व्यूवर्स को कि उनका कितना बड़ा एक उत्साहवर्धन दिया उन्होंने आपको. तो आप, क्योंकि ये इस समय करंट टाइटल्स है और इस पर लोग चाहते हैं कि शोध करके इसके कुछ ऐसे पॉइंट्स निकाले जाएं जहाँ पर आप इम्प्रूव करें. और इम्प्रूव करने के लिए रिसर्च होती है. एक डिग्री तो, इसके आगे मैं क्या बोलूँ, डिग्री तो लोगों को मिल ही जाती है, ठीक है ना. लेकिन आपके ऊपर भारत सरकार इतना अच्छा खर्चा करती है. हमने अभी जैसे कि बताया कि हम लोग इतना समय देते हैं. आप कह रहे हैं कि आप सर इतना कैसे समय देते हैं, तो उससे कुछ नेशन को, राष्ट्र को कुछ मिलना चाहिए. तो ये आप, अच्छा है कि आपने इस बात को समझा और ये प्रश्न भी उठा दिया. लेकिन इसमें कोई विशेष बात नहीं है. बात सिर्फ इतनी है कि हम इसमें जो है मिल करके काम करें, और इस काम को करने में मुझे अच्छा लगता है. मेरा पैशन है, मेरा लव है, ये मेरा डेडिकेशन है, ये कि हम डिफरेंट सेक्ट्स पर और डिफरेंट थीम पर जो कि चल रही है. अब तो मुझे कोई मिल जाए तो मैं मैनेजमेंट पे भी PhD कराऊँ, कि आयुर्वेदिक मेडिसिन के मैनेजमेंट में क्या है. मुझे कोई मिल जाए तो मैं रेगुलेशंस पे जो सर्वे कराऊँ कि किस रेगुलेशन का क्या इम्पैक्ट जा रहा है, ड्रग रूल 1945 में जो भी चीज़ें आ रही हैं, या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट पर मैं PhD करा दूँ. मुझे तो कैंडिडेट चाहिए. थॉट्स तो मेरे पास हैं ईश्वर की दया से. आई नीड कैंडिडेट टू वर्क ऑन दोज थॉट प्रॉब्लम्स, एंड certainly the country will be in the benefit. Country will be in the benefit. Nation will be the benefit by the all the findings. ये क्या आप मनरेगा आप समझती हैं कि किसी एक दिन में आ गई? ये JNU की थीसिस टाइटल्स हैं. ये जितने भी स्कीम्स चलती हैं ना बड़ी बड़ी, सब प्रोफेसर्स के द्वारा कराई गई थीसिस टाइटल्स हैं. ये जान लीजिए आप. हाँ, नेक्स्ट प्लीज. सर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था और आपने उसका जवाब भी बहुत एक अच्छे वे में दिया मुझे. सर एक आपका एक कमेंट चाहूँगी मैं. NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसके अंदर की इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च को बहुत प्रमोट किया गया और उस पर बहुत एम्फेसिस दिया गया, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सही समय पर सही कदम उठाया गया है, बिल्कुल सही नीति है. और अब कोई एक विषय अपने आप में संपूर्ण नहीं है, न कोई एक व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण है, न किसी एक व्यक्ति का ज्ञान अपने आप में संपूर्ण है. जब तक आप समावेशी समसामयिक विषयों पर सबका सहयोग सहकार लेकर के शोध नहीं करेंगे. आज के दैनिक जागरण में उठा करके आप पढ़ लीजिए, करीबन हर अखबार में हिंदी के या अंग्रेजी के बनारस से छपने वालों में छपा है एक इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च कि ये जो बनारस शहर है धार्मिक शहर है, तो यहाँ नारियल बहुत चढ़ता है, तो नारियल की जटा को उन लोगों ने उसमें मेडिकल से हैं लोग, CMS से
एक दिल्ली से मैडम है, और डॉक्टर ये डेयरी टेक्नोलॉजी के लोग हैं। और उसमें मतलब कि मैं गलत नाम प्रोनाउंस नहीं करना चाहता, लेकिन 4 लोगों के वो 4 लोगों का है, जिसमें से कि एक आप लोगों की तरह से ही रिसर्च स्कॉलर हैं, और उन लोगों ने काम किया है मिल करके। तो देखिए कहाँ कहाँ से आया, मेडिकल आया, एग्रीकल्चर आया, इकोनॉमी आई, और इस सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ करके उन्होंने कहा है कि ये जो जटा है, जटा को इतने इतने टेम्परेचर पर जला देने के बाद जो प्रोडक्ट आता है वो एंटीऑक्सीडेंट है। तो इस तरीके के जो रिसर्चेज हैं ये आज के समय की डिमांड है। इंटरडिसिप्लिनरी ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च ही आज के समय की डिमांड है। और अगर जहाँ जहाँ आयुर्वेद और ये सारे अपनी जो देखिए एनईपी में आप एक जगह आप पढ़िए तो एक जगह लिखा हुआ है कि हम अपनी संस्कृति के ज्ञान को सिर्फ संस्कृत विश्वविद्यालयों तक ही ना रहने दें। यस सर। ठीक है ना। अब हमें उस संस्कृत विश्वविद्यालयों से निकाल करके उसमें विज्ञान को भी लाना होगा। 1904 में जब महामना मालवीय जी महाराज या भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जब ये कॉन्सेप्ट बनाया था कि बीएचयू का एस्टेब्लिशमेंट जब 1916 में हुआ, तो 1904 में उन्होंने 5 विद्यालयों की स्थापना की बात की थी। कला महाविद्यालय, विज्ञान महाविद्यालय, गंधर्व महाविद्यालय, महिला महाविद्यालय और आयुर्वेद महाविद्यालय। तो ये कॉन्सेप्ट उस समय से है कि सबको एक साथ आना पड़ेगा कला को, और इसीलिए यहाँ पर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च तो आज एनईपी से दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में जा रही है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय तो इस बात पर गौरव कर सकता है कि इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च यहाँ पर सिंस इट्स इंसेप्शन हो रही है। जब से ये बना है तब से हो रही है। आपको एग्जाम्पल अगर दूँ मैं तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डॉक्टर सीके कटियार, जो कि एक सिग्नेचर हैं इस फील्ड में। और ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के वो एमडी रसशास्त्र हैं, पीएचडी फार्माकोलॉजी हैं, और ड्रग डीजीसीआई रह करके डॉक्टर जीएन सिंह जी रिटायर हुए हैं। दोनों लोग ऐसे रिटायरमेंट केज में। उनकी बेसिक डिग्री फार्मेसी की है, एम फार्मा, और पीएचडी काय चिकित्सा की है। तो इंटरडिसिप्लिनरी और ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च का ही समय है। आई एम वेरी मच ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू द ऑल हु फ्रेम्ड द एनईपी। और हम लोगों ने भी अपने कुछ सुझाव एक मीटिंग करके, इसी विभाग में मीटिंग हुई थी और हम लोगों ने भेजा था कि ये चीज़ें आयुर्वेद के लिए होना चाहिए। तो आप आज की श्रृंखला में जो आपने बात की वो मुझे तो ऐसा लगता है कि इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च और ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च ही भविष्य है। कन्वेंशनल रिसर्च तो चलेगा ही चलेगा, सब्जेक्ट को तो मजबूत करना ही करना है, नया नया इन्वेंशन तो उसमें करना ही करना है, लेकिन उसके बराबर ही ये इंटरडिसिप्लिनरी और ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च को भी महत्व हम प्रोफेसर्स को देना चाहिए। इसलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से प्रोफेसर्स जो साइंस में हैं, इंजीनियरिंग में, स्टेम में हैं, मैथमेटिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ या जो कुछ भी हैं, आप चाहे कहीं भी हो, आर्कियोलॉजी में हो, चाहे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हो, जेनेटिक्स में हो, चाहे ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा पे हो, अपनी कुछ सीट्स को एलाइड्स में भी दीजिए और इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को बढ़ावा दीजिए। So we came to the end of this today's session of interdisciplinary research. We have discussed on many questions with the sir, and sir gave example very accurately or very widely. So I thank you sir to give me the opportunity to talk with them or discuss with them with this topic. थैंक यू ऑल, यू विश यू ऑल द बेस्ट। और उस काम को पूरा करिए कि नीति आयोग आपके पेपर पर पॉलिसी बनाए कि वेलनेस सेंटर्स कैसे काम करते हैं। थैंक यू। नमस्ते व्यूअर्स ऑफ एनालिटिका आयुर्वेदा, वी विश यू ऑल द बेस्ट। शायद रक्षाबंधन के पहले का ये इंटरव्यू है, उसके बाद रक्षाबंधन। तो फिर मिलते हैं अगली सीरीज़ में। नमस्कार।